Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Now we can start. Okay. Okay. So let's start with array problem. My screen is visible. Yes, sir. Okay. So what we can do? So I'm going to solve 2 or 3 data structure problems related to array, string, and the object, and then after we will move on the sorting algorithms and all. So question is implement a function to count the number of even and odd numbers in the array. So basically, we have the array and we have to find or we have to just return an output from that array, and the given array is something like this. We have this array 1, 2, 3, 4, 5. And now what we want as an output is something like, if we have this array, so we have to return something like this object where we have a key that is even, and we have a 2 piece, or I mean we have a 2 count of the even number. So this is even, and the odd should be what? 352. Oh, sorry, 1 is also odd, so 3. So this is the output which we expect. So we have to implement a function for that array which returns this output. So if we have something like this, then we have something even is 3 and odd is 3. So this is the output we expect, and this is the input. Any input. So basically, function do something. Function is a generalized thing which is helpful to all use cases. So if we have this array, then the output should be this. If we have another array, then the output should be different on the basis of their count of the odd and even numbers. So yeah, we are going to implement this function on the dashboard. So okay. So we have this numbers const numbers is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we want to inbuilt to make a function which returns the count of odd and even numbers. So I'm going to make one function here. So function count even odd. Count, sorry, happens here. Okay. So count I'm just going to refresh my web page. Now, const array is equal to 22, 3, 4, 5, 6. And now we have a function. So count odd
even, and now this function expects a array as an argument. So here, this function have this what? We have this array, and what we are going to do, we are going to do some operations here to return a output. So I'm going to initialize two variables here. First is event count, and second is odd count. So I'm going to initialize two variable event count. It should be 0. Initially, it should be 0. Similarly, odd count, it should also be a 0. So we have the even count, we have the odd count, and now what we are going to do, we are going to iterate over this array, and then we are going to return something like this. So output format is like this. So this is the output format. So what I am going to do, array dot for each for each method which iterate over the array and returns the same array. So we are not going to return a new array because our output is in the form of object. So we are not going to use a map. If we have to return our output as a new array, then only we use map method. So what is the key difference between map method and for each method? Map method returns a branded array on a new address, but for each method returns the same array over the iteration. Yeah, after the iteration. So this for each method expects number as a callback. So here number we have received already, and now what we can do, अरे अब हमने ट्वीट करा तो पहले आइटम पे जाएंगे, तो इफ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ नम अब यह एक मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है जो आपको बताता है क्या कि अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो तुम्हें 0 मिलेगा, अदरवाइज मान लो कि मॉड्यूलर ऑपरेटर लगाओगे तो इट रिटर्न्स अ रिमाइंडर. सो वी आर गोइंग टू इक्वल्स ट्रिपल इक्वल्स टू if number modular operator 2 is triple equals to 0, then only what we can do, we are just going to increase even count. So even count plus plus. You can write this or you can write something like this as well. Even count plus 1. And that's it. So if number modular operator 2 is triple equals to 0, then you are going to increase the even count variable. Else, otherwise, if it is not the even, then what happens? It is an odd number. So odd count should be what? Odd count should be odd count plus 1. That's it. So here we have the two variables here, even count and odd count. So now we have the appropriate value for the even count and the odd count. So what last step is, you have to return an object from this function. So how can you do that? So for this, you are going to return an object because the output format is object. So return object, and now you can write a key even, and even should be what? What? This even count. And odd should be what? This odd count. Yeah, how many?
Yes. So here we are. Yes. So we have returned this object from this array. And now what happens? You are going to just use this console to just log it is right or not. So console.log. And now you have to call this function called count odd even with the required parameters. So required parameter is what? This array. So you are just going to pass this as a array as an argument. So here we have this control this function. So whenever this function has been called, then this array is copied inside this parameter, and on the basis of this parameter, you are going to just iterate over the particular array. So yeah, now we can just run the program. And yes, you have the even as 3 and the odd is 3. So if you are going to change this array, then output should be changed. So yeah. So now odd is 4 and even is what? 3. So that is the overall problem where the why we are going to we are picking this question because of on the whatever the function you are doing inside the function, you can make a output as on the as expected in the output which is given. So here output is in the form of object. So we have set this object, right? So that's the plan. Okay, so any doubt or any questions regarding that? No, sir. Uh, okay, okay. So any question? Anyone have? Okay. So I expect you have no doubt at all. Hmm. Yes. So now we are going to solve another data structure problem. So problem is merge two arrays and remove the duplicates. It is most important question from the interview point of view because this is the very common question asked by the interviewers in the data structure problems. So just understand whatever we are going to done inside the program. So we have to merge two arrays and then after we have to remove the duplicates. Okay, cool. So if we have an array called array1 is this.
and post array 2 is something like this, 3, 4, 5. So the output which we expect, okay, I'm going to let you in. कौन है भाई? Yes. So output which we expect is something which is what? This array with 1, 2, 3 and 4, 5. So this is the output which we expect. Whatever the duplicate items we have to remove. If we have something like this, then output should be 1, 2, 3, 4, 5 because we have 2, 4. If we have something like this, then output would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this output we expect from the program. Okay. So what we can do? So I'm going to just remove this program. And now we have this array 1 is this. And array 2 is this. And now what we have to do, we have to just write a function which merge these two arrays and return an array with removal of duplicate items. So what I can do, we have a function and I'm going to name it merge and remove duplicates. And why this normal array challenges are important from the FSD or from the full stack development program, because in daily program, something like if you are working as a front-end developer and you have a array of items with like we have two arrays and you have to just merge these two arrays, and in both the two arrays you have some common items. So what you want, the array which returns or the array which is required of the merging of these two arrays, and then after you have to remove the some duplicate item, something like user info. If user info is common in both of the arrays and you want user info exist only one time inside the array, for that kind of things you have to do some kind of programs. So ऐसे programs बहुत important होते हैं from the front end development, because arrays के साथ objects के साथ आप बहुत खेल रहे होते हो, so you have to take care of that. So what I want, I'm going to receive two arguments here, array 1 and array 2. And yes, we have this function. And now what you can do, just okay, so I'm going to make a copy of the what these two arrays. So I'm going to initialize a variable called merged array, and this should be, अब देखो array को merge कैसे करते हैं, you can do something like this as well. बहुत ही easy, दो वे है, दो तीन बहुत सारे ways है, आप use कर सकते हो array dot slice. शांतनु का ज्वाइन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए ना। नहीं अब ज्वाइन हो गया सर ने, लॉगिन कर लिया है। Okay. So array dot slice, and you can pass something like this, array 1 dot slice array 2. It means what? Inside this array 1, you are going to just make a copy of this array 2. So if you do something like this, console.log merged array and merged array, and let's try. And okay, I'm going to clear my console and just run the program. Okay, you have to call this function as well. So merged duplicates, and you have to pass array 1, array 2, and just use this console.log
And yes, that's it. Just trying to run this program. Okay, array 1 and array 2. Merge duplicates. Okay, and array 1 and array 2. Just run this program. Yes. So you have this array 1, 2. Okay. Array 1 dot slice. Okay, I am doing wrong here because we have to. Okay, now the program. Just clear it. Okay, so I'm doing another approach here. I'm just going to return an array with spread operator B two arrays. So something like this, array 1. I'm just spreading it out, array 1, and then what? Okay, because देखो अब यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट में array 1 लिया है, मुझे इससे array 1 को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, and then array 2. So what happens? It merges these two arrays and return a merged array on a branded new place. So I'm just going to clear it out and run the program. And yes, we have 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. So now this merged array and the array 1 and these and array 2 have the 3 different addresses inside the memory heap of the JavaScript engine. So inside the JavaScript engine, we have a call stack and the memory heap. So memory heap actually do what? It saves the memory and gives the address of that memory which is stored inside the memory heap. So now merged array have the different address, and array 1 and array 2 have the different address. Okay, cool. So now we have the merged array, and now what we can do? We can do something like this. What we have to do, we have to just merge and you have to remove the duplicates. So first step is done. You have merged these two arrays and now you are going to make a loop here to remove the duplicates. So for now I'm going to initialize the I variable and this gives 0 and now I is smaller than. Okay, तो अब यहाँ ये देखना है कि हमें डुप्लीकेट रिमूव किससे करना है. अब बताओ जो फर्स्ट एरे में होगा वो तो अपने आइटम्स ही होंगे, तो डुप्लीकेट्स तो इस वाले एरे में कंपेयर करना है ना. तो आई एम गोइंग टू लूप ओवर द एरे 2. सो एरे 2 डॉट व्हाट डॉट लेंथ एंड नाउ I plus plus. We have this loop and okay, so array 2 dot length. ठीक है, हमने लूप लगा दिया. अब मैं एक डुप्लीकेट वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ. लेट डुप्लीकेट शुड बी फॉल्स. मैंने array 2 पे इटरेशन करा है कि मैं array 2 को कंपैरिजन करूंगा इस मर्ज्ड एरे से, इस वाले एरे से, कि क्या इसका आइटम इसके अंदर है या नहीं है. So let me check. So I have just initialized a duplicate variable which is false, and now I'm going to make another loop here. So for let j is equals to what? 0. J is smaller than merged array dot length, and now j plus plus. j plus plus. And now अब देखो जब भी नेस्टेड लूप लगाते हो तो whenever the value of I should be 0, then j will run from 0 to whatever the length of the merged array. So here the length of the merged array is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So when I is equals to 0, j runs from 0 to 8. After that, the value of I should increase to 1. So when the value of I should be 1, then j should run from 0 to 8 again. Similarly, I runs but for what? 0, 1,
2, 3, because I am just writing this comparison. I is smaller than array 2 dot length. So now I'm going to make a condition if array of I, okay, so sorry, not array 2 dot I is equals to merged array, and I'm just going to pass here G. Why it is? Because अब मैंने क्या करा कि array 2 dot I, मान लो कि array 2 में this 3 है, तो अभी array 2 dot I मतलब क्या होगा, I की वैल्यू अगर 0 है तो ये वैल्यू होगी 3. 3 इज ट्रिपल इक्वल्स टू व्हाट? अब ये मर्ज एरे में 0 से चलेगा, तो 0 इंडेक्स पे 1 है, तो ये कंडीशन नहीं इक्वल होगा. फिर 1th इंडेक्स पे क्या है, दिस 2 है, नहीं इक्वल होगा. 2 इंडेक्स पे क्या है, 3 है, तो यस दिस शुड बी इक्वल. मतलब एरे 2 का 3 एंड मर्ज एरे जे का 3 जिस 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 भी इंडेक्स में मैच करेंगे, उस इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट को ट्रू कर देंगे. डुप्लीकेट को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे. सो डुप्लीकेट शुड बी व्हाट, ये ट्रू. एंड नाउ यहीं पे मैं ब्रेक लगा दूंगा. ब्रेक क्या करेगा, इस पूरे लूप से तुम्हें बाहर कर देगा एंड आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा. तो मैंने डुप्लीकेट को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया. अब देखो ये लूप यहाँ बंद हो रहा है. मैं यहाँ एक कंडीशन दे देता हूँ कि अगर डुप्लीकेट नहीं है, इफ डुप्लीकेट इट इज नॉट इक्वल टू डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट फॉल्स है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू merged array dot push what array 2 का I इंडेक्स. मैं फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी. और अब मैं यहां से क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा merged array and just do this, run this program. 2 4 3 4 5 6. ओके, अच्छा मेरा तो ये कंसोल आ रहा है ना, ये मुझे ऐसे कंसोल तो मैंने हटा दिया है. 1 2 3 4 3 4 5 6. नहीं मेरा कंसोल चल रहा है क्या? ओके, हमने इनिशियली डुप्लीकेट को फॉल्स रखा है. ठीक है, हमने आई को 0 से अरे 2 डॉट लेंथ तक चलाया, आई प्लस प्लस करा फॉर जे इक्वल्स टू 0. merged array dot length j plus plus array 2 I merged array j duplicate 2 break if not duplicate merged array dot post array 2 I, and then we have returned this array. So what happens, let me check on the another browser. Okay, if array 2 dot I merged array dot j अगर इनकी वैल्यू सेम होती है, 1 नहीं है. अब देखो ना, आई की वैल्यू 0 है, तो array 2 I जे की वैल्यू तो array 2 डॉट I मतलब array 0 is merged array 0 नहीं है. Sir, second
सेकंड जो हमारा लूप है उसके अंदर तो हम डुप्लीकेट को रिटर्न नहीं कर रहे, तो डुप्लीकेट क्या वैल्यू चेंज करेगा मतलब पेरेंट लूप के अंदर? कौन सी लाइन पे? हमारा जो जे वाला ये है, क्या कहते हैं, लूप है। सो इसके अंदर हम डुप्लीकेट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब ट्रू कर रहे हैं। लेकिन उसको हम रिटर्न तो कर नहीं रहे। सो ये क्या पेरेंट लूप के अंदर, मतलब आई वाला जो लूप है उसके अंदर चेंज करेगा वैल्यू को? नहीं यार, मुझे तो बस उस लूप से बस बाहर निकलना था। आई मीन यहाँ से मुझे बस कुछ रिटर्न नहीं कराना है, मुझे उस लूप से बाहर निकल जाना है। ओके। तो यहाँ तो ऐसा कोई इशू है नहीं। Okay, so let me do one thing. Just doing some controls here and check whatever the output is coming. Okay. Uh, let me try. And if I'm doing something, अगर यार कहाँ गया फिडल का ऐप ना, जीएस फिडल। अगर मैं यहाँ पे एरे से स्लाइस ना करके मैं सिंपली कर दूं स्लाइस एरे वन डॉट slice and just passing a empty array. Okay. Let me try with this. So, okay, sorry. So, what is the problem here? The problem is basically, actually, what you have to do, you have to just copy or just compare the value in array 2 with the value in array 1. So, here, the merged array returns something like this. So, let me check merged array and this merged array variable, and yeah, so I'm just going to pass this parameter as well. So checking. Okay, so what is the merged array? It is 1 2 3 4. So it is just make a copy of this array, or you can simply do something as spread operator like this. Array 1, both is same, because why we are going to do this, because we are going to make this merged array dot push. I'm going to explain this algorithm or this program from very starting. So समझना कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट हमने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया जिसमें array 1 और array 2 पास करा है एज अ पैरामीटर्स. देन आफ्टर वी हैव मेक अ कॉपी ऑफ array 1. तो मर्ज्ड array में array 1 का कॉपी है. देन आफ्टर हमने एक लूप लगाया है i इक्वल्स टू 0 से array 2 के पूरी लेंथ पे. मतलब अब मर्ज्ड array में array 1 की वैल्यू है और आपने एक लूप लगाया और एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा जिसको आपने इनिशियली वैल्यू फॉल्स दे दी. Then after what you have to do, you are going to make another loop जो j से स्टार्ट होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी. अब i क्या कंटेन कर रहा है, वो एरे 2 का लेंथ कंटेन कर रहा है. j 0 से स्टार्ट हो रहा है और एरे 1 में एरे 1 की लेंथ तक चल रहा है. मतलब अब i जो है वो इस वाले लेंथ तक चल रहा है और j किस लेंथ तक चल रहा है, इस वाले लेंथ तक. तो जब i की वैल्यू 0 है, इट मींस व्हाट, कि यहाँ पे ये वैल्यू 3 कंटेन है. और j क्या करेगा, इस एरे के अंदर लूप लगा के चेक करेगा कि क्या 3 अवेलेबल है क्या एरे 1 के अंदर. अगर ये 3 अवेलेबल है तो क्या करो, डुप्लीकेट को ट्रू कर दो और ब्रेक कर लो. अब देखो क्या हो रहा है. अब यहां से डुप्लीकेट ट्रू हुआ और ब्रेक हो गया. ब्रेक होके तुम्हारे पास फिर i की वैल्यू बढ़ गई
क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गया, ये लूप बंद हो गया, मतलब नेस्टेड लूप का ये फॉर लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जब ये लूप क्लोज हुआ तो फिर आई की वैल्यू 1 हो गई। अब नाउ जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये कंपेयर करेगा, अब आई की वैल्यू 1 मींस क्या है, कौन सी वैल्यू कंटेन कर रहा है, 4 कंटेन कर रहा है। क्या ये 4 इसके अंदर अवेलेबल है, तो भैया बिल्कुल अवेलेबल है, तो भैया फिर से डुप्लीकेट को ट्रू करो और ब्रेक कर दो लूप को। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई अब नाउ 5, तो क्या ये वैल्यू 5 इसके अंदर अवेलेबल है, तो नहीं है। इट मींस दिस इज नॉट अ डुप्लीकेट वैल्यू, सो यू हैव टू पुश दिस वैल्यू इनसाइड दिस एरे 1। सो इसलिए आपने किया कि अगर डुप्लीकेट नहीं है, मतलब डुप्लीकेट की वैल्यू ट्रू नहीं है, तो आपको क्या करना है, मर्ज एरे मतलब एरे 1 के अंदर ये जो आई इंडेक्स की वैल्यू है एरे 2 की, वो वैल्यू पुश करा देनी है। तो मर्ज एरे इनिशियली ये था 1 2 3 4, जैसे ही उसको डुप्लीकेट नहीं मिला, ये 5 भी इसमें क्या करा दिया, पुश करा दिया। सिमिलरली जब 6 भी नहीं था तो 6 को भी क्या कराया, पुश करा दिया इसके अंदर, और इसने एक नया एरे रिटर्न कर दिया विद दी this 1 2 3 4 5 6. Is it make sense or any problem? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार आई थिंक दिस इज आस्किंग इन द इंटरव्यूज. So any problem, any issue, you can discuss with me. सर जे वाला जो लूप है वो थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। तो एक्चुअली जी देखो, कभी भी नेस्टेड लूप होता है ना, तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि एक को तुम आई वाला जो ऊपर वाला लूप होगा उसके लिए जो नीचे वाला लूप है वो अपने लेंथ तक पूरा चलेगा। तो इनिशियल तुम ऐसे समझो कि जो फर्स्ट लूप है ना, दिस फर्स्ट लूप इज फॉर एरे 2, मतलब इस वाले के लिए है, और जो जे लूप है वो एरे 1 में इटरेशन कर रहा है। तो जब आई की वैल्यू 0 है, इट मींस जो पेरेंट लूप है वो 3 कंटेन कर रहा है, एंड जे 0 से लेके इसकी जो कॉपीड है ना मर्ज एरे के अंदर, इसकी पूरी लेंथ तक चलेगा। तो जब तक आई की वैल्यू 0 है, जे 0 से लेके यहां तक चलेगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर जे पूरी लेंथ तक चलेगा और चेक करेगा 4 अवेलेबल है तो भैया डुप्लीकेट को ट्रू कराओ और ब्रेक कर दो, 5 अवेलेबल नहीं है तो इसको पुश करा दो, डुप्लीकेट फॉल्स है इसका मतलब इसको मर्ज एरे में पुश करा दो। तो जे क्या हो रहा है ना, एक एक आई की वैल्यू के लिए पूरी एरे 1 में ना क्या कर रहा है, इटरेशन कर रहा है। समझ आया? ओके, हाँ सर लेकिन अगर एरे 1 के अंदर लास्ट में 4 के बाद में एक और 3 होगा तो भी क्या मतलब, ये तो पहले 3 पे ब्रेक कर देगा, सो लास्ट वाला 3। तो भैया अगर तुम ये 3 दोगे ना तो भी अब अभी देखो जो एरे 2 है, आई की वैल्यू है, ये 3 रखा हुआ है, तो ये हाँ 3 तो जे की पूरी वैल्यू के लिए चेक करेगा ना, जैसे चेक करेगा मतलब 3 इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये 3 तो इसका 3 तो रिटर्न करेगा। आई थिंक इसका तो 3 रिटर्न करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि ये एरे 1 के अंदर है, ये एरे 2 से डुप्लीकेट हटा रहा है ना ही कि एरे 1 के डुप्लीकेट्स को हटा रहा है। यस सर। डुप्लीकेट्स हटाने का मतलब क्या है, जो वैल्यू एरे 2 में भी एग्जिस्ट करता है एरे 1 में भी एग्जिस्ट करता है, वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए एरे मर्ज्ड एरे के अंदर। ओके ओके ठीक है। ठीक है गाइस, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो टेक इट इन माइंड। ओके, एक बहुत सा नॉर्मल कॉमन ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो थर्ड इज व्हाट, so the problem is implement a function to merge multiple objects into one. So you have to implement a function to merge multiple objects into one. How can you do that? So कोई idea? I think आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा. So my object is obj1 is equals to this a should be 1 and b should be 2.
const obj2 is equals to what? B3 and C4. And now you have to make a something like this. You are going to make what? You are going to merge these two objects. But here you have a key with the same name in both of the objects. You have a B and you have also B in object 2 as well. So what is output you are going to expect? Output should be object is equals to something like this. A1 B should be what? 3, because this 2 is replaceable or replaced by this value because ये बाद में आएगा. And C should be 4, something like this. ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है तुम्हें, ऐसा रिटर्न कराना है. So what you can do, अब देखो, अगर मैं एक सिंपल अप्रोच बताऊं तो एक सिंपल अप्रोच ये है कि तुमने बना दिया फंक्शन merged object and you have received obj1 and obj2, and now return obj1 and obj2, and here you have to do console.log merged object and you have to pass obj1 and obj2 as an argument. Let me run the program. And yes, I think it merged these two array, but it makes a nested object. So what? Okay. Because why it is happening? Because we are not doing a spread operator. So I'm just changing it. And yeah, now it returns the expected output. A1, B3, and C4. What happens? The spread operator is a JavaScript function which is introduced in ES6, ECMAScript 6, whose meaning is just make a copy of any non-primitive data types and return the copied object or array on the branded new place. So now the address of this object is what? A new reference in the memory heap. So this is the first approach. It is very optimized approach, but you can do in another way as well. So you can do something like this: return object, and this object will be O capital. So return object and a method called assign. And here you have to pass an empty object as a first argument, and second is this this object. So what you can do, you can simply do this thing like spread operator है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? obj1 और obj2 ऐसे भी कर सकते हैं. I think I'm not sure. Just going to run this program. Object.assign. Okay. And just run the program. Okay, so let me check. सर नॉर्मली दोनों अगर पास कर देते तो चल जाता है. हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर से भी कर सकते हैं. Object.assign ये भी एक मेथड है. ये 6 के पहले आया था, तो ये भी यूज करते हैं. एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो कॉपी. ओके. ओके, सो अच्छा मैं पास ही कर देता हूँ ना दोनों, है ना? यही बोल रहे थे ना तुम? यस सर. ओके, नाइस. तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि obj1 पास कर दो और obj2 पास कर दो.
Yes, it also works. Nice, thank you. So this way you can make a merged object, और you can simply do. अब देखो ये असाइन क्या करेगा, क्योंकि ये न्यू प्लेस पे नहीं करेगा. अब देखना ध्यान से समझना, इन इसका भी एड्रेस ना सेम होगा. तो हमें कभी भी ब्रांडेड न्यू एड्रेस पे चाहिए होता है, तो आइडियली हमें ये इससे ज्यादा बेटर है कि ऑब्जेक्ट बनाओ और दोनों obj1 को और obj2 को क्या कर दो, स्प्रेड कर लो. ये ज्यादा बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है. ठीक है, चलेगा. ओके, ठीक है. एक और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा इसके लिए, तुम लोग को पहले सोचना है, देन वी विल इम्प्लीमेंट. कन्वर्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स into an object where keys are the strings and values are their length. So you have to convert an array of strings into an object where keys and strings are the values of their length. So what it means, if you have something called const strings, and this is something called like apple, banana, and mango. And what you have to do, you have to return a output something like this. Well, apple, and what is the character count of apple? So it is what? 5. So something like this, apple 5, banana 6, and mango should be what? 5. So you have to return this as an output, where you have the apple, you have the banana, you have the mango. Okay. So think about it. How can you achieve? This is the input which you received. You have to make a function which takes this string as an argument and return this as an output. Just think about it. And कोई अप्रोच हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, बताइए.
Yes, Nikhil. So I'm not hearing your voice. कोई नहीं सुन पा रहा था भाई. सर म्यूट थे उस टाइम पे आप. Yes. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. You have this string, array of strings, and you have to return this as output. ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, जावास्क्रिप्ट खुद अपने आप स्ट्रांग होते चला जाएगा. जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग करने का ये बहुत अच्छा तरीका है. छोटे छोटे एरेज ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करते रहो. नहीं जाना है पूरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, बाइनरी ट्रीज एंड ऑल, पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना अच्छे से कर लो. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू. ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस. गिव मी अ सेकंड. Yes. So what we are going to do in this. Okay. So we have this strings and what you can do. So I'm going to make a function here. Function array to length object, and it returns this array as an argument, and you have to modify this array like this, or you have to return this output. Let's do some, right? So I'm going to make a variable here, length of object, and it should be 0. So length object is 0. Sorry, not a 0. I'm going to initialize a empty object because we want this object to return. So last, by this function, we are going to return this length object after modifying this according to the operation. So length object should be empty object, and now we are going to use this method array.map, and now this item or simply string as a callback, and inside this string what we are going to do, we are going to use this length object, this empty object, and you can pass whatever the string is coming. So when you map this array, then the first item inside this string is this apple. So you are going to use whatever the string is coming, and this syntax should be for what? For the keys. So length object string, it means it returns this apple. So now this apple should be what? Is equals to this string dot length. It means what? कि अब क्या होगा कि ये जो रिटर्न करेगा ये क्या होगा? ये एप्पल होगा, और ये क्या होगा? एप्पल का लेंथ होगा.
तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल असाइन किया, ये जो रिटर्न करेगा ये एप्पल फर्स्ट टाइम में, एंड एप्पल इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड टाइम में बनाना, ये लेंथ ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंग, ये जब तुम ऐसे सिंटेक्स लिखते हो ऑब्जेक्ट में, इट मीन्स व्हाट, इट रिटर्न्स दी वेरिएबल, और ये वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, उसकी लेंथ होगी. नाइस. एंड नाउ you are simply going to return the length object. ठीक है. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे एक कंसोल लगा के चेक करा देता हूँ. कंसोल डॉट लेंथ ऑब्जेक्ट str एंड यस, ऐसे ये मैं कंसोल करा के तुम्हें दिखा देता हूँ. ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. अभी मैं इसको यहाँ से रिटर्न नहीं कराता हूँ, और यहाँ मैं कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और फंक्शन को कॉल कर देता हूँ. तो फंक्शन को कॉल कैसे करना है, एरे टू लेंथ ऑब्जेक्ट, आपने इसको भेज दिया इसके अंदर. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली पास दिस स्ट्रिंग्स एज एन आर्गुमेंट. तो दिस स्ट्रिंग्स कैरी दिस एरे, तो एरे के अंदर ये एरे कॉपी हो जाएगा. एंड नाउ लेट्स ट्राई. सो क्लियरिंग माय कंसोल ब्राउजर एंड रन द प्रोग्राम. एंड देखो, ओके 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 ओके, लेंथ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नहीं आ रहा है. हाउ कैन इट पॉसिबल? ओके, सो जस्ट गोइंग टू रिटर्न. देखते हैं रिटर्न तो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, रिटर्न भी नहीं कर रहा. क्या मैसेज है? ठीक है, अब रन करते हैं. हाँ, तो इसलिए ये बेसिकली कंसोल नहीं कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ कि हम क्या चाहते हैं, लेंथ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग बनाना है, एक मिनट, करना तो चाहिए यार. लेंथ ऑब्जेक्ट एंड दिस स्ट्रिंग, run this program. So okay, आउटपुट हमारा पता नहीं आइडेंटिफाई क्यों हो रहा है. वैसे हम कंट्रोल वी आर डूइंग दिस. अगर मैं ये किया है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी वैल्यू आई है ना, नाम का एक की सेट करा है. व्हाट एवर द आउटपुट इज कमिंग एज लेंथ, वी आर जस्ट कॉपिंग इनसाइड दिस की. सो लेंथ ऑब्जेक्ट स्टीयर फर्स्ट टाइम एप्पल होगा, सेकंड टाइम बनाना होगा, थर्ड टाइम पे मैंगो होगा, और जो उसकी लेंथ होगी वो उसकी लेंथ हमने उसकी वैल्यू असाइन कर दी, और लास्ट में हमने लूप से जैसे हम बाहर आ रहे हैं, हमने रिटर्न करा दिया लेंथ ऑब्जेक्ट को. सो या, एनी क्वेश्चन? कंसोल क्यों नहीं चल रहा है? नो आइडिया अबाउट इट, बट आई एम सॉरी, बट दिस इज द राइट अप्रोच. एनी क्वेश्चन? Nice. Any question? नो अच्छा, सर. तो अब तुम्हें बेसिक आइडियाज लग चुके होंगे कि एरेज और ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, एंड यू कैन मेक अ डिफरेंट अप्रोच रिगार्डिंग दैट. डज इट मेक सेंस? यस सर. ओके. ओके. So for now it is, I think we are done with the some programs. और अभी हम एक आध दिन और प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स और लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे. So this is our basic things which we have to do.
एंड ठीक है, ओके ठीक है. Now we are moving towards our sorting algorithms. सर इसको हमने एक और मतलब कोई एक और अप्रोच से किया था अभी. बिल्कुल, और एक प्रोग्राम्स के देयर डिफरेंट अप्रोचेस. अगर आपको लगता है कि आप आपने कुछ अलग करा है तो बता सकते हो. सर हमने बस एक लूप लगा दिया है, मतलब लाइक, और ऑब्जेक्ट के अंदर पुश करवा दिया जितने भी ऐसे हैं उन सबको. बढ़िया जो बढ़िया. और कल का जो मतलब था वो भी सॉल्व हो गया था. कल ओके, का क्या जो इशू था उसमें? सर ये जो हमारा एवरी एवरी जो ये था क्या कहते हैं इसको एलिमेंट था, वो हम एवरी के अंदर जो हम एक फंक्शन डाल रहे थे वो क्या करता था कि जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता था, उसको उसका डिजायर आउटपुट मिल जाता था, तो वो स्टॉप कर दे रहा था मतलब लूप को. सो इसके ओके, लिए एवरी के बजाय मतलब नॉर्मल लूप यूज किया है. सो ये कंप्लीट हो गया. बढ़िया. हु इज दिस? कौन था ये? प्रकाश. यस सर. बहुत बढ़िया. Nice. So now, what we are going to do, we are going to understand insertion sort algorithm. Insertion sort algorithm. So insertion sort algorithm, we have discussed about the bubble sort algorithm, and now we are going to discuss about insertion sort algorithm. So what insertion sort? Insertion sort basically uses recursive technique. Recursion is something is very useful for some of the programs, बट रिकर्सन एक बहुत चैलेंजिंग होता है कि कभी कभी रिकर्सन की प्रोग्राम्स इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं. जिससे क्या होता है कि आप अगर इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे तो फिर क्या होगा, जैसे हमने एक प्रॉब्लम देखा था अपने कॉल स्टैक के साथ, कि अगर हम अपने ऐसे कंडीशंस लगा दिए जो इनफाइनाइट लूप की तरफ चलता है, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा कॉल स्टैक क्या हो जाता है, कॉल स्टैक क्या हो जाता है, फुल हो जाता है. जिसके कारण क्या हो जाता है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है. एक टर्म आता है स्टैक ओवरफ्लो, जो कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है. फिर स्टैक ओवरफ्लो के कारण क्या होता है कि तुम्हारी पूरी सिस्टम क्या होने लगती है, हैंग होने लगती है. योर इंटायर सिस्टम इज गोइंग टू हैंग बिकॉज आप एक रिकर्सिव लूप में चले जाते हो जहां वो इनफाइनाइटली चल रहा होता है विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग. तो एक रिकर्सिव टेक्निक है, हम रिकर्सन की बात करेंगे लास्ट में, बट तो डीप समझते हैं. इंसर्शन सॉर्ट जो बेसिकली है वो बेसिकली हम यूजफुल है फॉर व्हाट. तो आप बोल सकते हो देयर इज अ पोर्शन ऑफ द एरे दैट इज sorted and other is unsorted. There is a portion inside the array which is sorted and another is unsorted. So what you have to do, so you have to compare the elements from the unsorted portion one by one. There is a portion of the array that is sorted and other is unsorted. So you have to compare the elements from the unsorted portion one by one. And
insert them into the sorted portion in the correct order. तो जो अनसॉर्टेड होता है, वन बाय वन हम अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं एंड इंसर्ट करते हैं उसको सॉर्टेड पोर्शन पे एक करेक्ट ऑर्डर पे। तो अगर मैं इसकी स्टेप टू स्टेप गाइड की बात करूं, इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, तो देयर इज समथिंग 4 स्टेप्स जो इंसर्शन सॉर्ट के सूडो कोड में आता है। स्टेप 1 should be what? Start by comparing the second element of the array with the first element, assuming the first element is the sorted portion. तो क्या है, स्टार्ट बाय कंपेयर करना है, सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करना है, और हम इमेजिन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सॉर्टेड है। इफ द एलिमेंट, ओके, आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ सॉर्टेड पोजीशन पे, ठीक है चलेगा। अब आप बोल सकते हो कि स्वैप कर सकते हो कि स्वैप दी swap the second position, second element, swap the second element if it is smaller than first element. Start by comparing the second element of the array with the first element, assuming the first element is the sorted portion. अगर assume कर रहे हो, but अगर वो छोटा है तो उसको first element से क्या कर दो, swap कर दो। Step 2 है iterate in comparing the first element with the each element of the unsorted portion. And यहाँ एक लाइन है कि if the element from the unsorted portion is smaller, than the first element, then swap it. अब देखो क्या है, स्टेप 2 में क्या है कि इटरेट करना है थ्रू कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो कि तुमने सेकंड एलिमेंट को मान लिया कि तुम्हारे पास पहले दो एलिमेंट्स पकड़े, फर्स्ट एलिमेंट, और तुमने फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड मान लिया, और सेकंड एलिमेंट से आपने क्या स्टार्ट करा, कंपेयर करना स्टार्ट करा, और अगर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो स्वैप कर दिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों में से है जो स्टेप 1 से निकल के आया है उससे तुम्हें कंपेयर करना है इंटायर अनसॉर्टेड पोजीशन पे, और जो भी उससे छोटा है उसको क्या कर दो, उस फर्स्ट वाले एलिमेंट से स्वैप कर दो। तो यही लिख रहा है कि इटरेट थ्रू कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट विद द ईच एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड पोर्शन। If the element from the unsorted portion is smaller than the first element, then swap it. तो ये first 2 step है, and now we are going to discuss about step 3. तो एक बार देखो, 2 मिनट का टाइम देना सब यार, I'm just coming back.
Yes, so these two steps are done. Then step 3 is कि iterate आपने कर लिया through comparing the first element with each element of the unsorted portion, and if the element is the unsorted portion, then if it is smaller than first with the first element, then swap it. तीसरा step है after iterating through the entire array, increment is sorted so after iterating through the entire array, increment the sorted portion to the next index and recursively compare the value of the last index of the sorted portion with each value of the unsorted portion and swap where the value of the unsorted portion is smaller. मतलब क्या हुआ कि अब देखना समझना सर कि तीसरा स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि आफ्टर ट्रेडिंग थ्रू द इंटायर एरे, जब हमने इंटायर कर लिया, इंक्रीमेंट द सॉर्टेड पोर्शन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से हमने सब कुछ कंपेयर कर लिया और अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे सॉर्टेड है, तो हम क्या करेंगे पहले वाले जो लूप है ना उसका इंडेक्स इंक्रीज कर देंगे, मतलब आई की वैल्यू क्या कर देंगे अब बढ़ा देंगे. Increment the sorted portion to the next index and recursively compare the value of the last index of the sorted portion. अब क्या है कि जैसे हमने एक स्टेप ऊपर गया, हम पीछे वाले को कंपेयर करेंगे कि भैया तुम सॉर्टेड हो ना, अगर तुम सॉर्टेड हो तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर से तुम्हें रिकर्सिवली क्या करेंगे कंपेयर करके सॉर्ट करेंगे. तो मैं जाऊंगा, तो लास्ट स्टेप है the sorted portion shall increase until it covers the entire array building a sorted array. ये तब तक करेंगे जब तक हमें इंटायर एरे सॉर्टेड मिल नहीं जाता है. तो एक बार मैं तुम्हें सिलेक्शन सॉर्ट का एक डायग्राम दिखाता हूँ. सिलेक्शन सॉर्ट, अब देखना है यहाँ पे अब देखो अब देखा सब ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है. पहले देखो क्या करेंगे, Yes. स्टेप 1 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड है. तो पहली बार में हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, अगर इन दोनों में स्मॉलर फर्स्ट इंडेक्स वाला है तो इनके बीच में रिप्लेस कर देंगे. अब जैसे हम इसको किए रिप्लेस, मतलब फर्स्ट वाले में हमने रिप्लेस कर दिया 12-20 के बीच में, सॉरी गिव मी अ सेकंड, ये सिलेक्शन ही है ना, हाँ ओके, तो गिव मी अ सेकंड. तो पहले 20 और 12, तो मिनिमम वैल्यू एट इंडेक्स 1 12 और 10 के बीच में किया, ठीक है, और इनके बीच में फिर 10 और 15 के बीच में, और ये मुझे रुक जाओ, सिलेक्शन सॉर्ट, एक मिनट में सेलेक्शन पे आता हूँ. सिलेक्शन
और आई डॉट स्क्रिप्ट। चलो इसमें इमेज नहीं दिया है, एक बार मैं प्रोग्राम करता हूँ और प्रोग्राम के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे सॉर्टेड करना है। तो लेट्स डू वन ट्राई। सो मैंने एक इंसर्शन एक एरे बना लिया, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैंने दे दिया 8 3 5 4 1 9। now you have to do with the selection sort, sorry insertion sort. So function, अच्छा हमने सिलेक्शन सॉर्ट हमने सर्च किया ना, हमने तो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में बात की। फंक्शन insertion sort, and now you can pass this array as an argument, and अब आप क्या करोगे, यहाँ एक लूप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट फ्रॉम दी, कहाँ से हमने बोला था सेकंड एलिमेंट को क्या बना था कंपेयर करने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड मारना था, तो सेकंड एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट। हमने एक लूप लगाया और लेट I is equal to what 0 and I is smaller than array dot length। आप array I is smaller than equals to array dot length -1 कर सकते थे, बट आप इक्वल्स टू साइन नहीं लगा रहे हो, I प्लस प्लस हमने स्टार्ट कर दिया। और अच्छा सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो I की वैल्यू क्या होगी, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 इंडेक्स से स्टार्ट ही नहीं करेंगे। एंड नाउ अब मैं कंपेयर करूंगा, वैल्यू कंपेयर करूंगा, वैल्यू कंपैरिजन यूजिंग व्हाट, क्या अभी कंपैरिजन करने के पहले आपको गो थ्रू करना पड़ेगा और आइटम्स के थ्रू, तो गो थ्रू द एलिमेंट्स बिहाइंड इट, जो भी इसकी बिहाइंड है मतलब पहले है, उससे हमें कंपेयर करना है क्या ये सॉर्टेड है, क्योंकि हमने स्टेप 2 में पढ़ा था कि iterate over comparing the first element with each element of the unsorted portion. If the element from the unsorted portion is smaller than the first element, then swap it. ठीक है, तो हम गो थ्रू करते हैं, तो फिर हमने एक लूप लगाना है जो कि स्टार्ट होगा j से, लेट j इज इक्वल्स टू, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 1 है, तो इसके इधर ही तो सॉर्टेड होगा ना, मतलब अगर मैं इसको सॉर्टेड मानता हूं तो मैंने I की वैल्यू यहां से कंपेयर करा, तो मैं अब इससे इधर की तरफ मैं क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा, तो j इज इक्वल्स टू I माइनस 1, I की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब j की वैल्यू 0 होगी, तो 0 से स्टार्ट होगा, j इज ग्रेटर देन -1, मतलब 0 से तो छोटा होना ही नहीं चाहिए, एंड j माइनस माइनस, क्योंकि हम पीछे की तरफ लगा रहे हैं। अब देखना, अब मैं यहाँ पे वैल्यू कंपैरिजन करूंगा, and here if array of j plus 1, अब देखना +1 लगा रहे हैं, इससे क्या होगा कि I माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, मतलब j1 array of 1 मतलब 3 is smaller than array of j मतलब 0 इंडेक्स। अब देखो मैंने कुछ नहीं करा है, मैं इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन लगा रहा हूँ कि अगर j की वैल्यू 0 + 1 1 है, मतलब ये वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, अगर ऐसा है तो जस्ट क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप कैसे करना है, तो इसके लिए हमने कल बताया था, एरे ऑफ जो j + 1 है
array of j is equals to array of क्या हो जाएगा j और array of what j plus 1 समझ लो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहां से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है एरे। अब देखो कैसे ये चल रहा होगा। अभी आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 0 है, तो 0 से माइनस मतलब एक ही बार ये जे की लूप चल रही होगी सिर्फ इस साइड वाले के लिए। अब आई की वैल्यू बढ़ गई, लूप से बाहर निकले क्योंकि जे, अब अगली बार में क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस मतलब अभी तो जे की वैल्यू 0 है, जब अगली बार जे की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा मतलब -1 हो जाएगा, तो हम इस लूप से बाहर हो जाएंगे, तो फिर हम आ जाएंगे तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2। तो जैसे आई की 2 वैल्यू हुई तो जे कहां से स्टार्ट होगा 2 - 1 मतलब यहां से यहां तक के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा कि भैया इन दोनों में अगर एक दूसरे से बड़े छोटे हो तो स्वैप हो जाओ। जब ये पूरी कंडीशन चल जाएगी 0 और 1 इंडेक्स के लिए तो आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। अब इन तीनों में जे लूप लगा के चेक करेगा, फिर आई की वैल्यू पड़ जाएगी 4, फिर इन चारों में लूप लगा के चेक करेगा जे। तो आप एक बार चेक करना और ट्राई करना, फिर समझना, नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली पूछना। तो मुझे यहाँ क्या करना है, console.log इंसर्शन सॉर्ट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एरे। एक बार लॉग करते हैं, लेट रन द प्रोग्राम 1 3 4 5 8 9 and yes that's it, your insertion sort has been completed। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? No, sir. No, so Okay, so we are done with the insertion sort and bubble sort, and 2 or 3 sorting algorithm is only left, so we will continue tomorrow. Meanwhile, I'm going to take the what attendance. So yes, so let's start with attendance. अभिषेक, अभिषेक बता रहे हो? प्रतीक, प्रेजेंट सर। भावेश, present sir. अमन कुमार सिंह, प्रेजेंट सर। विनय प्रताप सिंह, प्रेजेंट सर। सागर मधोक, सागर मधोक, बरात संतोष, कोमल तिवारी, प्रेजेंट सर। कुमारजीत, चंदन कुमार, हिमांशी परासर, दुपाती प्रणव, भावना, प्रेजेंट सर। साक्षी, जयकिशन पांडे, अफजल अकबर शाह, प्रेजेंट सर। प्रकाश दास, यस सर। आयुष शाह, सुजॉय, प्रेजेंट सर। सुजॉय, प्रेजेंट निखिल त्यागी, निखिल त्यागी, औसफ अनवर, यस सर। प्रेजेंट सर। आशीष रॉय, आशीष रॉय, केशव, यस सर। विजयराज सिंह, विजयराज सिंह, आशुतोष सिंह, यस सर। शांतनु रस्तोगी, सर प्रेजेंट। मोहम्मद सालिद, संतोष तिवारी, यस सर।
Rahul Gezwal, Ashutosh Gupta, Present, sir. Nikhil Radhakar, Vidya Sundarkar, Yes, sir. Athang, Kunal Singh Rajput, Yes, sir. Nimish Sarma, Satyajit Panda, Vipin Kumar. सर कुणाल सिंह प्रेजेंट है. Okay, Vipin Kumar, Ayush Kumar Shah, Bandesi Ramat. Okay. Okay, guys. Catch you guys tomorrow. So just practice all the questions we have done today. Okay, sir. Yeah. Thank you, guys. Thank you. Bye. Thank you, Bye, sir. sir. Good night. Okay. Bye. Good night.